Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आया था which was about the debate over the collegium system. How the Supreme Court's and High Court's judges are appointed. We will understand that. So in this video, we will talk about the collegium system for judicial appointment in India. We'll understand what is this collegium system and what does our constitution says about when it comes to the appointment of the judges, how this entire collegium system evolved, and then lastly, what are the issues related to the collegium system. Recently, our newspapers are filled with this collegium system. This entire topic, it is important for both prelims as well as from mains point of view. You should know about the collegium system. We'll cover this in this video. We'll talk about 99th Constitutional Amendment Act, Chief Justice of India, the judges' cases, all of that is important. And especially from mains perspective, the entire constitutional provision for the appointment of the judges, the entire evolution of the collegium system, the issues related to this system, and how can we move towards representative judiciary. This entire topic is important from that perspective. So let's begin with this video. Now, when we talk about collegium system, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंपल से शब्दों में कोलिजियम सिस्टम एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है एंड दे आर ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन एक चीज़ स्टार्टिंग में ही नोट करेंगे, जो कोलिजियम सिस्टम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है, इसकी रूट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और ना ही कोई लॉ आया है पार्लियामेंट से जिसमें कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में कहा गया हो। रैदर जो कोलिजियम सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दिस बेसिकली इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ डिफरेंट जजमेंट्स आती हैं, उन जजमेंट्स के बेसिस पे जो सिस्टम है ये इवॉल्व करता है। थोड़ी अगर हम हिस्ट्री देखें, बेसिस देखें, सो आर पार्लियामेंट इट केम अप विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, National Judicial Appointment Commission. Along with this, the 99th Constitutional Amendment Act. This NJAC, National Judicial Appointment Commission, alongside with the 99th Constitutional Amendment Act, the aim was to bring reforms in judicial appointment. However, the Supreme Court of India held that this amendment, this National Judicial Appointment Commission, this is unconstitutional. And therefore, they declared it that this is void and they strike down the National Judicial Appointment Commission as well as the 99th Constitutional Amendment Act. तब से ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, ट्रांसफ़र के लिए फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कोलिजियम सिस्टम को यूज़ किया जाता है। एंड सिंस देन ओनली द कोलिजियम सिस्टम हैज़ बीन डिबेटेड फॉर लॉन्ग। And one of the big thing of debate over here is that the collegium system is blamed for tussles between judiciary and the executive, number one, and also that there is very slow pace of judicial appointments. Now recently judicial appointment को लेकर ही collegium system दोबारा न्यूज़ में आया है and a lot of bone of contentions are happening, a lot of issues are arising out of this collegium system. हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमें हमारे बेसिस क्लियर होने चाहिए। हालांकि आप न्यूज़ में कवर कर रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द कोलिजियम सिस्टम, बट विल टॉक अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ इट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव। सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम को समझते हैं। तो ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है
It's a 5-member body. The Supreme Court's collegium is 5-member body and it is headed by the Chief Justice of India. हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इनके साथ होंगे बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ देयर वुड बी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मिलकर बनाते हैं कोलिजियम सिस्टम। हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वो incumbent होंगे एंड देयर वुड बी 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का कोलिजियम इस तरह होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देयर वुड बी द 4 सीनियर मोस्ट जजेस एट द सेम टाइम। गवर्नमेंट कैन रेज ऑब्जेक्शंस। कोलिजियम ने जो अपनी चॉइस दी है कि भाई इन्हें अपॉइंट किया जाए, इनकी ट्रांसफ़र की जाए, गवर्नमेंट कैन रेज ऑब्जेक्शंस। But if the collegium system reiterates the same name, अगर उन्हें सेम नेम दोबारा भेज दिए, so in that case government is bound to appoint those as judges। समझ में आ रहा है? कोलिजियम ने एक चॉइस बनाकर भेजा किसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शंस रेज कर दी। अब ये कोलिजियम का उनके पास डिस्क्रिशन है कि वो उन रिकमेंडेशंस को, उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हैं या नहीं करते। अगर उन्होंने सेम नेम दोबारा भेज दिए तो गवर्नमेंट को उन जजेस को अपॉइंट या ट्रांसफ़र करना होगा। नाउ व्हाट डज दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो मेनली 2 आर्टिकल्स हैं जो किससे डील करते हैं, आर्टिकल 124 and Article 217. Article 124 appointment of judges to Supreme Court, 217 appointment of judges to High Court. So इन articles में कहा गया है that these appointments are made by President। क्या लिखा गया है, that the appointments are made by President who is required to hold consultation with such of the judges of Supreme Court and the High Court as he may think is needed। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा बट दे विल हैव टू होल्ड अ कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट अगर आप हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के अलावा कोई भी प्रोसीजर ले डाउन नहीं किया गया है कि अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, कैसे होगी। दिस इज जस्ट रिटन दैट द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सिंपल। तो किस तरह कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ, इंटरेस्टिंगली एज वी सेड कोई लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं और वहाँ से ये कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारा द फर्स्ट जजेस केस 1981। 1981 में फर्स्ट जजेस केस आता है which is basically SP Gupta versus Union of India 1981। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजॉरिटी जजमेंट में ये कहा that there is this concept of primacy of Chief Justice of India that was not really rooted in the Constitution। ये जो स्टेटमेंट आती है that the concept of being prime when it comes to the Chief Justice of India, the concept of placing the Chief Justice of India at a primate level, that is, was not really rooted in our Constitution। So therefore, the bench of the Constitution, the constitutional bench of the Supreme Court, they held that the term consultation which is given in Article 124 and 217 did not mean concurrence, it did not mean concurrence, agreement। So basically अभी जो हम पीछे देख कर आए कि क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा एंड दे विल होल्ड कंसल्टेशन विद द जजेस। अब फर्स्ट जजेस केस में ये कहा जाता है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेसी है वो रूटेड नहीं है।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेड दैट कि जो कंसल्टेशन टर्म यूज़ की गई है इट डिड नॉट मीन कॉन्करेंस, इट मीन्स दैट द प्रेजिडेंट विल कंसल्ट दीज फंक्शनरीज फॉर अपॉइंटमेंट बट हिज डिसीजन वॉज नॉट बाउंड टू बी कॉन्करेंट विद ऑल ऑफ देम। वो कंसल्ट करेंगे, वो पूछेंगे जजेस को, लेकिन उनका जो डिसीजन होगा वो उन जजेस की जो उन्होंने कहा है उससे बाउंडेड नहीं होगा। इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। दिस वॉज द फर्स्ट जजेस केस। बड़ी बात है। जिसके बाद आता है सेकंड जजेस केस। ये आता है 1993 में। दिस इज बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इसमें क्या हुआ, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आता है और इससे पहले जो एसपी गुप्ता का जो डिसीजन था ये उसे ओवरटर्न कर देता है। और सेकंड जजेस केस में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर डिवाइस किया जाता है जिसे हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र जो भी हाई जुडिशरी लेवल पे होती है दैट विल बी डन थ्रू कोलिजियम सिस्टम। ये सेकंड जजेस केस में आता है बाय ओवरटर्निंग द फर्स्ट जज केस जजमेंट। एंड इन दिस केस it was a complete U-turn. Here it was held that the Chief Justice of India is primal in nature, because this is the topic of relating to the judicial family, and here the executive cannot have an equal say in this matter. When the matter related to judicial family comes, so in that case Chief Justice of India is primal in nature. बिल्कुल उल्टा हो गया फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। फिर आता है थर्ड जजेस केस 1998। क्या हुआ कि 1998 में जो देन प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, ही इशूड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बेसिकली एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताएं कि जो कंसल्टेशन टर्म यूज़ की गई है इसका मतलब क्या है। सो अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस was sent to the Supreme Court. Now when you read about Supreme Court of India, we all know that Supreme Court is the highest judicial court, and along with that the final court of appeal under the constitution. It is the highest constitutional court. It has the power of judicial review as well. And when we look at India, India is a federal state. We have single and unified judicial system, but our single unified judicial system is having 3-tier structure. At the top we have Supreme Court, followed by high courts, and then we have subordinate courts. And one of the important provision under the constitution is that which is Article 124. Which we just discussed. The entire part 5 of our constitution deals with the organization, independence, jurisdiction and power of the Supreme Court. And one important thing over here is that the president can take the presidential reference. Presidential reference ली जा सकती है। तो ऐसा ही हुआ। थर्ड जजेस केस के अंदर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई मुझे एडवाइजरी चाहिए आपकी ऑन द टर्म ऑफ कंसल्टेशन। तो क्वेश्चन ये था कि जब हम कंसल्टेशन बोलते हैं सो डज इट रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस फॉर्मिंग द CGI's ओपिनियन, और ओनली द सिंगल ओपिनियन ऑफ CGI विल मीन कंसल्टेशन, कि भाई सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेनी है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन माना जाएगा, या फिर देयर इज़ अ होल नंबर ऑफ जजेस जिनसे कंसल्टेशन की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे कहा कि ऐसी रिकमेंडेशंस जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग साइड विद द 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उनकी जो डिसीजन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द रिकमेंडेशन। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। तो रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं होगी,
एंड कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट कि जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्गसाइड द अदर मेंबर्स होंगी, without complying with the norms and requirements of the consultation process, they're not binding on the government. So this is what the collegium system is. So we can say that the collegium system, it was born through the 3 judges case, and it is in practice since 1993, and it is used for the appointments and the transfer of the judges in high courts and Supreme Court. And alongside this, always remember, there is no mention of collegium either in our original Constitution of India or in any successive amendment. There is no mention of collegium. Collegium is headed by Chief Justice of India along with the 4 other senior most judges. The names that are recommended by the High Court's collegium, it will reach the government only after the approval of Chief Justice of India and the Supreme Court's collegium. And the judges of the entire higher judiciary, they are appointed through the collegium system only. The government has the role only after the names have been decided by the collegium. So what happens? Collegium recommends the name of the lawyers, or they recommend the names of the judges to the central government. And similarly, central government also sends some of the proposed name to collegium. The collegium will consider the names or the suggestions which are made by the central government, and then they will resend their file to government for final approval. And as I said before, if the collegium will resend the same name again, the government has to give its assent to the names. But the time limit is not fixed to reply. And this is one of the reasons why the appointment of judges take a long time. And through the 99th Constitutional Amendment Act 2014, the National Judicial Commission Act was established, and the objective was it to replace the collegium system for the appointment of judges. And then Supreme Court upheld the collegium system, and they strike down the NJAC that this is unconstitutional, basically on the grounds that it involves political, executive and judicial appointment, which is against the principle of basic structure, that is independence of judiciary. So keeping that in mind, they they strike down the NJAC and called it void. When you read polity, you read about the qualifications that are required for the appointment of judges. If a person has to be appointed as the judge of the Supreme Court, number 1A, they has to be citizen of India. He should have been the judge of High Court for 5 years at least, or they should be advocate of the High Court for 10 years. And he should be distinct jurist in the opinion of the president. Only then it will happen. And the Constitution has not prescribed any minimum age for the appointment of judge to the Supreme Court. So this is how the collegium works. But yes, there are some issues related to the collegium system. Number one is that now when you look at the judicial appointment process, you see that there is complete exclusion of executive from this judicial appointment process. जो system create किया गया है, there are very few judges who appoint the rest, and that too in complete secrecy. They are not accountable to any administrative body. So it is said that this may lead to the wrong choice of the candidate, while you can overlook the right candidate with this approach. Alongside this there's also chances of favoritism and nepotism. The collegium system does not provide any specific criteria when it comes to testing the candidate for the post of CJI, because it leads to the wide scope of nepotism and the favoritism. It gives rise to non-transparency of the judicial system, which is very harmful for the regulation of law and order in India. And the one thing that we read in our polity classes, it is that it is against the principle of checks and balances.
In this entire system, the principle of check and balance is violated. In India, we have three organs that work partially independently, but they keep check and balance on each other. The executive, the judiciary, the legislature. They control when one gets the excessive power. But however, when you look at the collegium system, we see that this gives judiciary immense power and it gives very little room for checks and poses the risk of misuse. Alongside this, another major issue with this is that it is a closed door mechanism. Critics have pointed out that this system it does not involve any official secretariat. It's a closed door affair. There is no public knowledge on how and when a collegium meets and how it starts to take the decision. There are no official minutes of the collegium proceedings as well. Therefore, we are saying this is the entirely closed door mechanism. And plus, there is unequal representation. The major concern is also that when you look at the composition of the higher judiciary, the women are fairly underrepresented there. It leads to unequal representation as well. So, what should be the way forward? See, we need to bring the balance between independence and accountability. The real issue is not who will appoint the judges, judiciary appoint karegi ki executive appoint karegi. That is not the real issue. The real issue is that the manner in which the judges are appointed. So for whatever will be the composition of the Judicial Appointment Commission, it is very important that we strike a good balance between the judicial independence as well as judicial accountability. The executive should have a say in appointment. But the composition of the Judicial Appointment Commission should be such that it does not result in compromising the judicial independence. And we need to give care, we need to take care to ensure that the institutional primitive of the court for dispensive justice is maintained inside judiciary. So there should be justice inside judiciary, there should be equality of opportunity, there should be fixed criteria for the selection of judges. And alongside, we need to reconsider the establishment of NJAC, because NJAC's act may be amended to include some safeguard so that it is constitutionally valid. It can reorganize to ensure that the majority control remains with the judiciary. Then gender diversity, representative judiciary, that is an issue. So far, no women has been appointed as the Chief Justice of India. So therefore, we need to maintain and promote gender diversity in higher judiciary. There should be a fixed percentage of its members as women judges that will lead to the evolution of gender neutral judicial system of India. However, it is expected that Justice B.V. Nagaratna will be the first women Chief Justice of India in September 2027, and this would be a welcome step in this direction. So, this article is very important. In this, we understood how India's collegium system evolved, and we also tried to put some light on what are the major issues related with this collegium system. So that is all for this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, please do like and comment down below. I will see you all in my next one. Thank you so much.